तो हॉट एयर बैलून राइड के बाद अभी मैं जाने वाला हूँ ग्रीन टूर में। तो अभी कुछ देर में ही मुझे लेने आने वाले हैं कोई, जो ग्रीन टूर वाले हैं वो आने वाले हैं और मुझे लेके जाएंगे ग्रीन टूर के लिए। तो ग्रीन टूर में क्या क्या कवर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है ग्रीन टूर में कवर होता है गोरेमी पैनोरामा, डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी, नार लेक, इहिलारा वैली, 3.5 किलोमीटर हाइकिंग करने के भी ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। बेलीसिरमा विलेज फॉर लंच के लिए हम लोग बेलीसिरमा विलेज में जाएंगे। सेलिमी मोनास्ट्री, इसके बाद एक मोनास्ट्री है सेलिमी मोनास्ट्री। यापकार किशिहार व्यू पॉइंट, कोई व्यू पॉइंट है यापकार किशिहार नाम का। और उचिशार पिजियन वैली। तो ये टोटल पैकेज है ग्रीन टूर का। तो ये ग्रीन टूर के लिए मुझे देना पड़ रहा है 40 यूरो। तो 9:30 पे ये स्टार्ट होने वाला था, हालांकि अभी 9:30 बज चुका है, तो अभी किसी भी टाइम वो आने वाले होंगे और ये 6 बजे तक चलेगा टूर। तो ग्रीन टूर के लिए अभी रवाना हो रहा है और हमारा गाइड जो है वो सामने चल रहा है हम लोगों को रास्ता दिखाते हुए। सो लेट्स गो टू ग्रीन टूर। Nice and easy. Nice. Hello, the snake is over here. तो मैं अभी काईमाक्ले अंडरग्राउंड सिटी के एंट्रेंस में हूँ और ये कप्पाडोकिया का जितने भी अंडरग्राउंड सिटी है उनमें से अभी तक जो आविष्कार हुआ है उसमें से सबसे बड़ा है। और माना जाता है कि इस रीजन में मोर देन 100 अंडरग्राउंड सिटी है, लेकिन अभी तक उसमें से 36 ही डिस्कवर हो पाया है और उसमें से 8 ऐसे सिटी है जिसमें से जाने का परमिशन मिलता है। तो उनमें से ये सबसे बड़ा है। और हमारे गाइड ने हमको पहले ही वार्निंग दे दिया है कि जिनको बहुत ज़्यादा बैक प्रॉब्लम है या फिर एस्थमा है तो इसमें से थोड़ा दिक्कत हो सकता है। So in this place you need to check some different kind of arrows. You might need to use it on later on. Red arrow means going down and blue arrows means going up to the exit if you find your loss. But if you stick with me, there will be no problem. Bir insanın sığabileceği kadar büyükse orası bir yatak odasıdır. Özellikle bu gördüğünüz bir yatak odası. Oraya tırmanmak için de merdiven kazmışlar diyebiliriz. So people, when you're entering, going through from here, check your right side and see an example bedroom. If one pocket carving is big enough to fit one person inside, that means that is a bedroom. And you can see the stairs in front of it to climbing up and get inside. तो ये जो अंडरग्राउंड सिटी है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में है 1987 से, जो अभी हमारे गाइड ने हमको बताया। Okay, let's get through inside. The entrance might be a bit shallow, so watch your step in here.
अभी हम लोग जहाँ पर है ये ग्रेव हुआ करता था। ग्रेव साधारण आदमी के नहीं, जो नर्स होते थे उन लोगों को यहाँ पर दफनाया जाता था। और उसका एडजेसेंट यहाँ पर चर्च भी है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। दिस इज़ चर्च। सो ग्रेवियर के साथ होने जो चर्च होता है उनको चैपल बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी चर्च में चले गए। So this is the church area. Görüyorsunuz aslında yeraltı şehrin ikinci katında, ama aynı zamanda ilginçtir ki pencereden dışarıda baktığınız zaman bir aslında gömü alanını görüyorsunuz. Bir mezarlık. Eğer bir mezarlık kilise alanına yapışıksa burası bir aslında şapeldir. Şapeller kiliselerden daha küçük dua etme alanları. फर्स्ट एंड फोर्थ सेंचुरी में रोमन से बचने के लिए क्रिश्चियन लोगों ने ये अंडरग्राउंड सिटी बनाया था। और ये जो नैरो पाथवे आप देख रहे हैं ये इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि इस नैरो पाथवे से ये लोग अपने दुश्मन को अंदर आने से रोकते थे। क्योंकि इतने नैरो जगह से रोमन सोल्जर बहुत ज़्यादा हेवी आर्मर पहने आने में बहुत दिक्कत होता था। और ये टोटल सिटी उस टाइम पे क्रिश्चियनों का घर था। फिर से एक टनल है और ये बहुत लंबा है, 20 मीटर का है। सो इट्स ए 20 मीटर टनल। Not this one? Oh, it is not the 20 meter tunnel. After that, okay. Yes, I would like to mention something. That's why I'm stopping. Okay. So this is the 20 meter tunnel he was telling about. Ventilation shaft. Ventilation. This is for the ventilation. Ventilation shaft. Okay. Aquí puedes ver esto por aquí. Check these holes. I'm going to mention. Hello. In this 50-meter bottom, you are actually looking at a winery. Winery. Yes, wine production area. There's the wine. So you're looking for a wine in the underground city. Nice, in the museum as well. Well, in those winery sections, we know that the ancient wine production can be performed in here. Normally, we are using the different kind of machines to produce the wine, but this is the primitive way of it, the first way. So this is the kitchen area. ये किचन एरिया हुआ करता था। देखिए अंडरग्राउंड सिटी में वो लोग यहाँ पर खाना बनाया करते थे। Şimdi şöyle bir detay var ki sen düşmanlar bize bir kere ateş yakmaz aslında çok mantıklı. Okay, you can use the stairs to get to the exit. I would like to make sure that everyone is going. Okay. So this is exit. This is the exit. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4. Only 4. This is the exit. अंडरग्राउंड सिटी का। तो अभी हम लोग फिर से कार में चल रहे हैं। अभी वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन।
Por favor. So we are at Nar Lake. हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है नार लेक. सो नार का जो मतलब है वो अनार होता है, अनार पोमेग्रेनेट, तो उसके नाम से ये लेक और बहुत खूबसूरत है. सो दिस इज़ द लेक कॉल्ड नार लेक. तो ये लेक अभी पानी इसमें बहुत कम है. जब इसमें पूरा पानी रहता है तो ये पोमेग्रेनेट का शेप ले लेता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है नार लेक. और इसमें बहुत ज़्यादा सल्फ़र है इसके पानी में. तो जैसे मेरे गाइड ने बताया, तो इसका पानी हम लोग पी नहीं सकते, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है स्किन डिजीज़ के लिए. अगर किसी को स्किन डिजीज़ है तो ये पानी उसके लिए बहुत अच्छा है. सो हियर बिहाइंड मी इज़ नार लेक. So here is our next destination, that is Selime Monastery, Selime Monastery, and ये है वो. Some places are a bit slippery because of the dust, so watch yourself, you might fall and hurt yourself. And I totally do not recommend you to go over the edges, because I saw some people are flying over here. So you can fly, but I totally do not recommend you to do it. Okay? Come with me. Arkadaşlar, bastığınız yerlere her zaman dikkat edin. Mutlaka benim bastığım yerlerden geçin. Kaygan olabilir tozlardan dolayı. Ve kesinlikle de kenarlara gitmenizi tavsiye etmiyorum. Düşenler oluyor. Ki gördüm. So we are at Selime Monastery, Merak etme, oluyor yani. and we will follow our guide. Which is me. Yeah. Like, you can go ahead. You can take the lead, so you can have the best. Okay. तो गाइड ने हमें हाफ एन आवर का फ्री टाइम दिया है, तो इस दौरान ये मोनेस्ट्री को घूम के देखना पड़ेगा. तो पहले इधर से स्टार्ट करते हैं. ओके. So it's a great rock formation, बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर है, निराला है एकदम. So it's a room inside monastery. तो ये जो सामने है ये कैथीड्रल है, लिखा हुआ है कैथीड्रल. So here is the cathedral.
अभी मेरे सामने ये है चर्च. सो दिस इज चर्च. ये जो मोनेस्ट्री है, इसे पहला जो स्टार वॉर फिल्म है उसमें यही जगह को ऐसे बैकग्राउंड यूज़ किया गया था बहुत सारे सीनों में. तो वही मोनेस्ट्री है ये. सो आई एम गोइंग डाउन. और मोनेस्ट्री विजिट हो गया. अभी नीचे जा रहे हैं. Well, maybe they just didn't see any of the books. They just didn't see houses. No, they just went through houses. So we are going to have our lunch now. Star Restaurant, Pension and Camping. You can sit anywhere you like in this line. They don't like this. I do, so don't worry.